Breaking lie of Maulana and Mufti on my channel, ex-Muslim Sahil official, stay tuned. अस्वीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। डू यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कुरान आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कितने प्रकार के कुरान उपलब्ध हैं? Preetam Shetty ji, what about multiple versions of Quran? Hafiz Quran, Warsh Quran, when Momins claim there is only one Quran. Sachwala ji. हाफिज कुरान क्या कहा उन्होंने? मैं देखा नहीं, सॉरी। Let me hit on that first. What about जी yeah, let me hit on that. मल्टीपल वर्जन्स ऑफ कुरान। जी हाँ, हफ्स है, वर्ष है। हाँ, जो है असल में वर्जन्स तो बहुत सारे हैं। खुद मेरे पास जो है 21 डिफरेंट वर्जन्स हैं। जो एक वर्जन बहुत ज्यादा पॉपुलर किया गया, वो उसको कहते हैं हफ्स वाला कुरान। ये भी असल में उन्हीं रावियों में से एक रावी है, जिस तरह के और सैकड़ों रावी थे। ये इस रावी की जो है मतलब कोई शोहरत ज्यादा हो गई और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जी एडम, आप क्या कह रहे थे? और अब इसमें सर 1924 के अंदर, हिस्ट्री को पढ़िए, 1924 के अंदर हफ्स कुरान को कैनोनाइज किया गया, मींस उसको स्टैंडर्ड कुरान बनाया गया। उस वक्त बाकी तमाम कुरानों को दरियाए नील के अंदर बहा दिया गया। हिस्ट्री में पढ़ा हुआ जनाब, आप जाकर लिख देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अल अज़हर यूनिवर्सिटी में, अल अज़हर यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्यों किया? अगर हम उसकी भी हिस्ट्री देखें तो जब क्लासरूम में बच्चे पढ़ते थे कुरान, तो एक बच्चा किसी और तरीके से लिखता था, दूसरा बच्चा किसी और तरीके से लिखता था। टीचर ने तमाम तरीके देखे नहीं हुए थे। दे हैड प्रॉब्लम कि किस चीज को सही करेंगे, किस चीज को गलत करेंगे। So मारामारी होती थी एडम, मतलब ये बातें भी आती थी, मारामारी होती थी, झगड़े होते थे बाकायदा। जी हाँ, That is why they canonized it. 1940s में किसी वक्त, मुझे अब इस वक्त याद नहीं एग्जैक्ट कौन सा वाला सन है, लेकिन 40s का कोई सन है, सऊदी अरेबिया ने इसको कैनन किया अपने इलाके में। 1984 में, ये 84 में हुआ है, किंग फहद के जमाने में। जी हाँ। उसके बाद अगर आप देखें सर के आपके इंडो पाक में एक कहानी बनना शुरू हुई कि कुरान का कोई हरफ, कोई नुक्ता, कोई जेर जबर पेश चेंज नहीं हुआ। ये उसके बाद कहानी बनना शुरू हुई है। Now we are going to examine the difference between early Arabic versus present Arabic, so that you can easily understand the scams in the Quran. अब हम प्रारंभिक अरबी बनाम वर्तमान अरबी के बीच के अंतर की जांच करने जा रहे हैं, ताकि आप कुरान के घोटालों को आसानी से समझ सकें। Mid-8th century, there still really is no canonization of any diacritical marks and of any vowelizations. In fact, do you see any Dhamma, Kasar, or Fatha there? Not at all. Not at all. So they haven't introduced. It's the dotting system that began to help with that. Okay, we'll get to as to why it is. Let me show you another one now. This is a Shiite Quran, and here you can see the early Shiite Quran. And this is known as Ali's Mus'haf Quran. Ali, that's right. Mus'haf Ali, who is the fourth caliph. That's right. And no diacritical marks, and certainly no vowelization. Why is this important? Let's look at the next slide. Take a look at those letters. What are these letters? Well, I mean, it appears that they are alphabet letters, the Arabic alphabet letters. Without the dotting, of course, it will be hard, but that's what it appears to be. Okay, these are the 28 letters. But let me show you what I'm going to do. Take a look at these letters as I put them up. There, you can see the aleph. Why don't you just read each one as I put each one up? The first one is the alif, the first letter. And the second one I put up? Kaf. Okay, and the third one? Lam. And this one? Mim. Ha. Okay, those are one more to go, and it's the wow. 1, 2, 3, 4, 5. So 6 of the 28. What's significant about those 6? Well, I mean, they're the one that can survive without having a dottings. They are unique letters. Right. They need no dottings. In every case, whenever you have an aleph, it's always an aleph. Whenever you have a kaf, it's always a kaf, or lam, or mim, or ha, or wow. That's right. The other 22 require dottings. Which mean the letter itself can change. Okay, let's do that. Let's now look at this smiley face. All right. As I put up the dots now, we're going to put up a number of dots because that smiley face could be one of 5 letters, couldn't it? And nobody knows it's a letter until you start putting dottings, actually. Okay, there's the first one there. That will be a noon, for instance. Okay, what's that? Ta. Okay, what's that? Tha. So already we've got 3 different letters. In one look. Noon, one ta, rasm, and tha. basically. All right. The smiley face is a rasm. Now let's go. What about this one? Ba. And this? Yeah. Okay, so 2 5. more with the dots below the smiley face. That's right. All right, now let's do this. Ready? Real quick. Noon, ta, tha,
ba. Yeah. The Can same you see- rasm, by the way. This is one rasm, one harf, one letter. Imagine now you repeat it in a word Okay, multiple times. without those dots, it's just a smiley face. And it's open for so many ways to read So it. there's 5 different letters that could come from just that one. And we see evidence of that. Okay, now let's do one step further. Let's look at 3 smiley faces together in the upper right-hand corner. You can see there's just 1, 2, 3. What would happen if we were to put dots above and below the line of those 3? You'll be surprised what might happen. I mean, you have right here a handful of them. It can change the meaning. Look, one is bait, house. One is nabata, it sprouted. Bayit, stayed over. Bint, daughter. I mean, you can go on, and it can vacillate between a verb, a noun, and so on and so forth. In fact, we addressed something like this in a book that I had the privilege to participate in called The Quran Dilemma, and we had even an entire table like this that deals with as many as 30 different possibilities. So we have just found 19 here. You have found over as many as 30 using the exact same 3 smiley faces. That's right. Just dots above the And line. here's what's so significant about what Jay is talking about, and what I'm trying to explain here is this is how it used to be before the dotting. You have just rasm without any dots, which mean it's open for interpretation, literally. That's why we have different ways of pronouncing things or reading them. So don't tell me that I read it one way and you read it the second way as if they're both the same. Which way is it preserved in the preserved tablets in heaven? You have to tell me that. उससे पहले आपके पास मल्टीपल जेर ज़बर पेश नुक्तों वाले डिफरेंट आयतों के नंबरिंग वाले कुरान मौजूद हैं, ठीक है? जी हाँ। अच्छा 28 आपने बोला सर कि 21 बोला, मेरे पास क्या हर किसी के पास nquran.com के ऊपर 36 डिफरेंट कुरान मौजूद हैं ऑलरेडी इसी वक्त अरबी के अंदर. nquran.com, every single person has it, go check it out, every single person has it. और उन्होंने जो अरबी के लफ्ज चेंज्ड हैं उन्होंने उसको कलर कोड कर करके दिखाया हुआ है आपको हर आयत के लिए. तो सर कैसे चेंज नहीं हुआ कुरान? और ये सारे मुसफ हैं. Once again, these are all मुसफ. अच्छा, हफ्स को क्यों पकड़ा गया? अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़े, हफ्स को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसके स्टूडेंट सबसे ज्यादा थे. जिस इमाम के स्टूडेंट सबसे ज्यादा थे उसके कुरान को उन्होंने पकड़ लिया. हालांकि हफ्स इज कॉल्ड अ लायर. हफ्स को झूठा कहा गया है, कज़्ज़ाब कहा गया है. वो चोरियां करता था, लोगों की किताबों में से चीजें उठा उठा के अपने नाम से छाप देता था. उसको चोर कहा गया, मक्कार, कज़्ज़ाब. आपने एक चोर, मक्कार, कज़्ज़ाब के लिखे हुए कुरान को कैनोनाइज कर दिया. यार दूरी फिटे मुझे यार, तुम लोगों को अंब का नहीं पता. अच्छा एडम इसमें एक कॉमेडी पता है तुमको क्या है? जी जी. अच्छा, इसको किस तरीके से रेफ्यूट करते हैं पता है? क्या वो हदीसों में कज़ाब था, कुरान में कज़ाब नहीं था. अजीब है यार. हदीसों को चोरी करता था, कुरान को चोरी नहीं किया था उसने. तो कुरान उसने कहाँ चोरी किया था? आसिम से. हाफ्ज जो है वो कुरान आसिम है, आसिम के हाथ का है. अभी उसने क्या क्या चोरी की तुम्हें पता है? आसिम का कुरान तो दिखाओ मेरे को. साहिल भाई हद है यार, क्या लॉजिक है इनका. पहले इसका जवाब है कि भाई आसिम का कुरान दिखाओ ना, देखिए उसने क्या क्या 2 नंबरी की है बीच में. ओ बाप रे बाप, इनके लॉजिक ऐसे होते हैं ना यार, दुनिया से एकदम पार वाले लॉजिक होते हैं इनके.